वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डी मॉरिस थ्योरम के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चरों में भी मैंने ये डिस्कस किया था कि डी मॉरिस थ्योरम क्या होती है। नाउ इफ n is any integer say positive and negative integer, then cos theta plus iota sin theta whose raised to power n is equal to cos n theta plus iota sin n theta, इसके इक्वल होता है। ये डी मॉरिस थ्योरम है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिस थीटा मीन्स cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। एंड सिस थीटा इंटू 2 थीटा n थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 2 थीटा अप टू n थीटा, ये एक रिजल्ट होता है। चाहो तो आप प्रूव करके देख सकते हो। इसको प्रोडक्ट करो आप, 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस आइटा साइन 2 थीटा, वी गेट cos थीटा प्लस 2 थीटा प्लस आइटा साइन थीटा प्लस 2 थीटा। इनकी प्रोडक्ट करोगे तो यही आएगा, और ये इसका जनरलाइजेशन केस है ना। कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। Now first example, if xr is equal to cos pi by 2 raised to power r plus I sin pi by 2 raised to power r, then prove that x1 into x2 into x3 up to infinity is equal to -1. Now solution, xr is equal to this, then x1 is equal to put r is equal to 0 to 1 to where r is equal to 1 2 3 and so on. x1 is equal to cos pi by 2 plus put r is equal to 1 plus iota sin pi by 2, x2 is equal to cos pi by 2 raised to power 2 plus iota sin pi by 2 raised to power 2. Similarly, x3 is equal to cos pi by 2 raised to power 3 plus iota sin pi by 2 raised to power 3. Then multiply of all these x1, x2, x3 up to infinity, x1 into x2 into x3 up to infinity is equal to cos pi by 2 plus iota sin pi by 2 into cos pi by 2 raised to power 2 plus iota sin pi by 2 raised to power 2 cos pi by 2 raised to power 3 plus iota sin pi by 2 raised to power 3 and so on. Then this will be equal to cos pi by 2 plus pi by 2 raised to power 2 plus pi by 2 raised to power 3 up to infinity plus iota sin pi by 2 plus pi by 2 square pi by 3 2 raised to power 3 up to infinity
क्योंकि इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कोस। ये क्या है, जीपी सीरीज विद कॉमन रेशो 1/2, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करेंगे वी गेट कॉमन रेशो, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/2। सम ऑफ जीपी सीरीज अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू ए मीन्स फर्स्ट टर्म दैट इज π/2 1 minus r is equal to 1/2 plus iota sine π/2 divided by 1 minus 1/2. π/2 divided by 1/2 we get cos pi. Cos pi plus iota sine pi. Sine pi is equal to 0, cos pi is equal to -1. So we prove the required result. Now next example. If alpha beta be the root of the equation x square minus 2x plus 4 is equal to 0, then prove that alpha raised to power n plus beta raised to power n is equal to 2 raised to power n plus 1 cos n pi by 3. Now the given equation x square minus 2x plus 4 is equal to 0, then x is equal to root of this equation minus b plus minus b square 4 minus 4ac, that is equal to 16 by 2 plus minus 12 iota divided by 2 is equal to 1 plus minus root 3 iota. And we have alpha beta root of this equation, so we consider alpha is equal to 1 plus root 3 iota and beta is equal to 1 minus root 3 iota, क्योंकि इसके दो ही रूट होंगे 1 plus root 3 iota and second root 1 minus root 3 iota, और अल्फा बीटा इसके रूट दे रखे तो इनमें से एक अल्फा होगा एक बीटा होगा. Now let r cos theta is equal to 1 and r sin theta is equal to root 3. मान लो 1 is equal to r cos theta, root 3 is equal to r sin theta. Squaring and adding these two, we get r square cos square theta plus sin square theta is equal to 1 plus 3, 4. That value will be equal to 1. So r square is equal to 4. R is equal to 2. R is equal to 2. Then cos theta is equal to 1 by r means 1 by 2. Sin theta is equal to root 3 by 2. And tangent theta is equal to sin by cos, we get root 3. Theta is equal to pi by 3. थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास पाई बाय 3. r is equal to 2 and theta is equal to pi by 3. Now alpha raised to power n plus beta raised to power n is equal to 1 plus root 3 iota raised to power n plus 1 minus root 3 iota raised to power n. अल्फा बीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी.
1 इज इक्वल टू क्या लिया था हमने, r cos थीटा, √3 इज इक्वल टू r sin थीटा. So r cos theta plus iota r sin theta raised to power n plus 1 is equal to r cos theta minus iota r sin theta raised to power n. क्या वैल्यू हो जाएगी, रेड टू पावर n. इसमें से हम r कॉमन ले सकते हैं, तो r रेड टू पावर n कॉमन आएगा. cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होल रेड टू पावर n प्लस cos थीटा माइनस आइटा साइन थीटा रेड टू पावर n. But De Morgan theorems, r raised to power n cos n theta plus iota sin n theta. Similarly, cos n theta minus iota sin n theta. This will be equal to r raised to power n, sin से sin cancel, 2 cos n theta. R is equal to 2 raised to power n into 2, that will be equal to 2 raised to power n plus 1, and cos n theta is equal to pi by 3. So we prove the result.